Hey guys, good evening everyone. So we're coming on to the next lecture of physics. मोशन हम लोग कर रहे थे. इफ यू रिमेम्बर हमारा पिछला वाला जो लेक्चर था उसपे हमने रेस्ट एंड मोशन, दैट इज द टू थिंग्स विच वी हैड डन. So we are just going to go forward, going on to our second lecture of physics, which is हम लोग chapter 1 कर रहे हैं physics का motion. इसमें हम लोग सेकेंड वाला लेक्चर करेंगे. अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं. उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे. सो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आज चलते हैं, विच इज लेक्चर नंबर 2. So guys, please keep following the channel so that आपको सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हम इसमें डाल रहे हैं वो सारे क्लैरिटी हो जाए, पर क्वेश्चंस करना ना भूलिए. एंड देयर इज गोइंग टू बी एन अनाउंसमेंट ऑल्सो दैट अब वेबसाइट भी फ्लोट हो गई है और टीच मोर, एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ पे जा सकते हो. वहाँ पे आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री, क्लास 9 की फिजिक्स, क्लास 9 की बायोलॉजी, क्लास 10 की केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ऑल दिस इज कमिंग अप. अभी तक उस पे हमने फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 11th और 12th के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. ओके, सो क्वेश्चंस जो आपके हैं चैप्टर 1 और 2 के केमिस्ट्री के, वो भी अपलोड हो जाएंगे आज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. और उसी तरह से बायो के और फिजिक्स के भी क्लास 9 के क्वेश्चंस जो है वी आर गोइंग टू अपलोड ऑन द वेबसाइट. तो जस्ट कीप वॉचिंग द वेबसाइट और देखो उसमें क्या क्या आपके लिए नया आता रहता है. So without wasting any time, let's go on to our lecture number 2. आज हम इसमें डिस्कस करेंगे what is a point defect. हम डिस्कस करेंगे what are scalar and vector quantities, scalar and वेक्टर क्वांटिटीज, और हम लोग मोशन को भी थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे, कीपिंग इन टू आर व्यू पॉइंट कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो एंड स्टडी व्हाट इज अ पॉइंट इफेक्ट. अब हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो होता है, any extended object, that can be treated as a point defect. Okay, so it means what? Extended object का मतलब क्या हुआ? जितने भी objects जिनको हम देखते हैं, they all are extended objects because these objects, they have a certain size. ठीक है. सो हम लोग बोलते हैं, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को. काइनेमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एन एक्सप्रेशन. काइनेमेटिक्स क्या हो गया? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक्सप्रेशन है. वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशंस को हम ओवरलुक कर सकते हैं या हम इग्नोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इट्स मूवमेंट. ठीक है. सो वी कैन राइट डाउन ओवर हियर ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशंस. So this is not point defect. There's a typing error over here. This is point object. ठीक है. So whose dimensions are overlooked or ignored in comparison to its movement.
उसे हम बुलाते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो अगर वी वांट टू लुक एट द वेल यू कैन से एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, सो वी कैन टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक कार मूव कर रही है और वो जो कार है दैट इज covering a distance of 10 kilometers, तो इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. Another example which we can take over here, that is earth. So you know that earth को हम लोग क्या बोलते हैं कि it is moving around the sun. तो अर्थ को भी हम लोग रिगार्ड कर सकते हैं, it can be regarded as a point object, right? So these are a few examples of point objects. Also अगर if we are taking a ball and we are dropping slowly, that can also be regarded as dropping slowly can be regarded as a point object. तो आई एम श्योर अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, और आप एग्जाम्पल्स जो है मेरे साथ इजीली यहाँ पे शेयर कर सकते हो. इन द कमेंट बॉक्स आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो सो दैट आई कैन आंसर वेदर यू आर राइट और नॉट. ओके, अगर ट्रेन ट्रैवल कर रही है फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, दैट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, पर अगर एक ग्लास आपके हाथ से गिर के नीचे गिर रहा है या नीचे गिर के टूट जा रहा है, राइट, सो ग्लास को हम लोग फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. राइट गाइस, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो इसी के बेसिस पे let's go forward. What are scalar and vector quantities? You already know कि scalars क्या होते हैं. Scalar quantities वो होती है which are generally you can say they have only magnitude. They are only represented by magnitude. So it has no sense of direction. Like for example, we can say we are taking mass. Mass is a scalar quantity. We are taking time. Time is a scalar quantity. Distance. Distance is a scalar quantity. Speed. Work. Power. Volume. Density. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के. क्यों? क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड तो है बट इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है. जैसे आप मास लेते हो किसी भी बॉडी का, तो हम बोल रहे हैं कि मास ऑफ एनी बॉडी दैट इज इक्वल टू 2 kg. So it has a numeric value which is 2 and it has a unit which is kg. There is no sense of direction in this particular example. So this is an example of scalar quantity. ओके, एक मैग्नीट्यूड को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट्स यूनिट. इस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे. ओके, नाउ ओवर हियर स्केलर्स जो है वो एक नॉर्मल एल्जेब्रिक ऑपरेशन को सॉरी एल्जेब्रिक ऑपरेशन को ओबे करती है. So we can write down over here that it obeys normal algebraic expression. It is going to obey normal algebraic expression और operation. जैसे for example आपने लिया mass और आप बोल रहे हो कि एक two bodies we are taking over here A and B. A का जो मास है that is 2 kg और B का जो मास है let's say it is 5 kg. So what is the total mass over here? The total mass that is going to be equal to 7 kg. Right? So we just normally adding दोनों को हम लोग add कर रहे हैं.
right? So it can have no other value if you're adding than 7 kg. It will have only one value on adding, that is 7 kg. And if you're subtracting, then it is going to be 5 minus 2 is equal to 3 kg. That is going to be the value. Then let's go on to another example over here. जैसे for example हम लोग बोल रहे हैं कि there is a point A, there is a point B, and there is a point C. So a girl that is traveling from point A to point B, and the distance over here, that is 4 kilometers. But she has to reach point C through point B, and we are saying that okay, then from point B she is traveling to point C, and let's say that she's traveling over here 2 kilometers. So how much of total distance has this girl traveled while she was traveling from A to C? Total distance can be represented by a numeric value, which would be 4 plus 2, 6, and a unit which is 6 kilometer. So this is an example of scalar quantity, which can be very easily represented by two mathematical operators. One is addition and the other one, that is subtraction. So let's try and understand now what is a vector quantity. Okay, so we're going on to, before describing motion, I'm going back over here and we are going to discuss about vector quantities. So what are, okay, let's just clear our screen, guys. I'm sorry about the bad voice. I'm running cold and cough. That is the reason. I hope all of you are studying really, really well. I tell every time that the videos, they're going to come regularly. But nahi hota hai. But hoga. Abhi hoga. Okay. You're going to get one video every alternate day. Right? Okay. So let's go on to the next one. Next we are coming to vectors. अभी देखें वेक्टर्स क्या होते हैं. तो वेक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो वेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ. ओके, इंफॉर्मेशन जो एक वेक्टर की होती है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हमें उसकी डायरेक्शन पता नहीं. अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है तो that is going to be a scalar quantity, then it is not a vector quantity. Okay, let's take an example over here. जैसे for example, you are a captain in the army. ठीक है? Okay, very, very bad diagram I have drawn, but anyhow. So we are representing the captain of an army like this. You are a captain of an army जो कि बॉर्डर पे पोस्टेड है. ठीक है, अब हो गई लड़ाई. तो इफ अ वॉर इज ऑन and you receive a wireless message from the commanding officer. So this is the captain which we have, and we have a commanding officer which is known as the CO. CO ने एक यहाँ से वायरलेस मैसेज भेजा है. Okay, so he says his orders are move half kilometer. You standing at this point A, half kilometer can be B, half kilometer can also be point C. So the commanding officer says that travel half kilometer और वायरलेस का कनेक्शन जो है वो लूज हो गया. Now the captain is under confusion, isn't it? So the captain, that is under confusion.
now what side I have to move, whether I have to move left or I have to move right, because the direction that is not mentioned. So there's going to be utter confusion over here. Okay, so the problem you face is because your information I'm really sorry, because the information over here is not complete. The CO has to give direction also. So इस ऐसी physical quantities जिसमें डायरेक्शन की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है, उसे हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज. So let's look at examples over here, guys. When we're looking at the examples, so we are saying that displacement is a vector quantity. Number 2, velocity is a vector quantity. Number 3, torque is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Force is a vector quantity. Momentum is another example of vector quantity. So all of these, they are examples of vector quantities. I hope everything is clear over here. Okay, now vectors will not obey the normal algebraic expressions. Why? Because अगर हमको यहाँ से right जाना है, हम लोग यहाँ से राइट चले गए, ए से बी चले गए, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं +½ किलोमीटर. अगर हम बी से वापस इस पॉइंट पे चले गए ए पे, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ½ किलोमीटर्स. So the mathematical operator will depend upon the direction as well, right? So for example, if we need to add 2 vectors, so we are adding 2 vectors. Let's say 2 meter plus 3 meter. So यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर की वैल्यूज आएगी, that can be from -1 to +5. इसमें से हमारे पास कोई भी वैल्यूज आ सकती है. एग्जाम्पल्स इसके हम कल वाली क्लास में करेंगे टू एक्सप्लेन इट मच बेटर. सो अब ये जो डिफरेंस है, दिस इज ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ डायरेक्शन, राइट? सो वेक्टर के ऐड करने के देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, बट दिस वी आर गोइंग टू इलैबोरेट in our class, in our next lecture tomorrow. So let's go on to how do we describe motion now. अब suppose हमको motion पढ़नी है एक object की, तो हमें locate करने हैं उसके position at different instance of time. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक reference point. Reference point क्या हुआ? दैट इज द पॉइंट जहां से मोशन शुरू होती है. तो फिजिक्स में इट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है? और इसको हम लोग एक एक्सिस पे, अगर हम एक एक्सिस ले रहे हैं इस तरह से, इट इज टेकन एज 0. So this 0, this is going to be what? It is going to be the reference point. या हम बोल सकते हैं कि it is the point of origin. Okay, now for example, there's a person who wants to start riding a bicycle in a straight line, right? So वो different locations पे होगा at different times. So let's say this is 1 second, this is 2 second, this is 3 second. Right? So we are taking over here that he's at 1 second he's traveling some distance, at 2 seconds he's traveling some distance, और यहाँ पे -1 ले लेते हैं,
और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, -2. दिस इज द डिस्टेंस विच वी आर टेकिंग ओवर हियर. सो यहाँ पे रेफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, t विच इज इक्वल टू 0 सेकेंड. ठीक है. Okay, so this is how we describe motion. Now, these positions they can be specified if measured from a reference point. अगर point of origin नहीं होगा तो हम इन positions पे measure नहीं कर पाएंगे distance. So इन positions को हम लोग specify करते हैं from the reference point or the point of origin. So let's try and explain this and also explain the vector quantities a little more and the scalar quantities a little more. So we are taking a straight road in which there is a cyclist. Let's say this is the point of origin 0 and he's traveling a distance of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So this is the distance we are taking in meters. So we are taking this distance in meters. ठीक है. और उसी तरह से अगर वो opposite side पे जा रहा है तो -1, -2, -3. So now he started traveling. Let's say origin हमारे पास क्या आ गया, t that is going to be equal to 0 seconds. यहाँ से bicyclist जो है that will start traveling towards right. At 1 second he reaches 2 meters. At 2 seconds he reaches 4 meters and at 3 seconds he reaches 6 meters. Okay, so a person is riding a bicycle and different locations पे different time पे हम इस तरह से उसको represent करते हैं. So we can make the following observations. Let's say looking at the picture which we have drawn, we're taking the time in seconds, that is t in seconds, and we are taking the position in meters, right? So let's say 0 second पे आ गया, फिर 1 second पे, फिर 2 second पे और फिर 3 second पे. So we're saying 0 second पे the position obviously is going to be 0. 1 second पे it has reached 2 meters. 2 second पे it has reached 4 meters and 3 second पे it has reached 6 meters. So what can we say over here? We can say that in 3 seconds he has traveled a distance of 6 meters. Now at this particular point, that is at 3 seconds, we are saying that he applies a brake. 3 seconds पे he suddenly remembers कि ओहो मुझे तो इस डायरेक्शन में नहीं जाना था, मुझे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, and instantaneously he starts going back. Okay, तो उसकी जो return journey है at various instants, so he is going back now from 6 पे उसकी क्या थी 3 seconds. ठीक है. फिर उसके बाद let's see what's happening now. We are again drawing the same kind of number line. This is 0 seconds, 1, 2 meters, 3 meters, 4 meters, 5 meters, 6 meters, 7 meters and 8 meters. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Right? और यहाँ पे -1, -2, -3 थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं -4. तो हमने क्या बोला कि उस he had traveled बेचारा 6 meters तक travel कर चुका था at t is equal to 3. So now he started moving
backwards because he's forgotten that he had to travel in the opposite direction. So 3 seconds पे he's at 6 meters. T is equal to 4 seconds पे he is at 4 meters. T is equal to 5 seconds पे he is at 2 meters. T is equal to 6 seconds पे he is at again the point of origin, वापस पहुंच गया. और T is equal to 7 पे he is at -3. So let's try and figure out what is happening now. तो यहाँ पे again we are drawing a table, time in seconds, and we are taking over here position in meters. तो ये आ गया हमारे पास 4 seconds, 3 seconds पे तो he's turned back, applied the brakes and he's turned back. फिर 4 seconds आ गए, 5 seconds आ गए, 6 seconds आ गए और 7 seconds आ गए. ठीक है. So 4 seconds पे कहाँ पे है वो? At 4 meters. 5 seconds पे वो कहाँ पहुंच गया? At 2 meters. 6 seconds पे at 0 meters and 7 seconds पे at -3. So we can conclude over here कि हमें किसी भी मूवमेंट को शो करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, ओरिजिन ऑफ एक्सिस की जरूरत होती है. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन आवर next lecture. We are going to study distance and displacement, and also I'll give you various calculations how to calculate the value of distance and displacement taking into consideration different examples. Right? तब तक तुम इसको अपने mind में recapitulate करो. I will see you in the next class soon. Bye bye and take good care of yourself.